Start with the saying that future is bright and collaboration is the only way we can do it. From industrial perspective, of course, this is a collaboration which we have to do, and the mantra for it is forming a team, working as a team to target the devil. And devil can be a disease which we are talking, it can be a cancer, it can be any of the disease which you are working. So it's important to combat something from many sides, that's all. And you guys see, best part for you guys are, you are not a contaminated brain, you guys have a fresh mind, and think of it. Thinking is a limit. Think of it how you can combat. For that, only thing is your basics should be good. So make sure you are brushing up your basics nicely, and that's the important part. If you are a good molecular biologist, read it nicely. If you are a cell biologist, you read it. If you are a signaling transaction person, read it. I'm telling, make sure your basics for everything should be good enough. Then it's easier to, there are three levels, of teaching which you just say. One is the basic level, another is the informational level, and third is the philosophical level. So I need everyone to have a basic first. Good level of a basic helps you to put a lot of information in it, and there is a lot of information floating across. Then I want to give you all that happy news that cancer drug, I was just giving an example only for cancer. See, these are all drugs which are billion-dollar drug. It's all came from academia. So you guys are playing an important role. Don't say that you are led behind or industry people are led behind, taking a lead. No, you originate, you partner with us, and then we take it forward. So it's a seeds comes from academia, and that seed becomes a fruit bearing tree, and that is what we use to do it. Okay, so it's more of a collaboration and academia industry relationship, that's the most important part. Next purpose is, what is the purpose for academia, India and industry interface? So important is interface with the industry, with the transfer of a knowledge and technology solution within the research center. We all explained from last 4 days, we are all keep on repeatedly talking on it and saying that there is a technology. See, don't restrict to your anything. Sir was telling just now that there is a molecule, you can make a molecule, think of it, make it a small molecule or a big large molecule. On a chemistry wise, you can synthesize it. From biology wise, you can think a process, or reading your book and all, and say, oh, these guys have target, Google it out and find, oh, RAF is there, is it any drug which is hitting that, what is the reason why it has not been hit, think of it, and hopefully you will get something. So any idea, novel which is, or which has its own way, discuss with the expert and think of it, and you write a project. Be a I just want to tell you guys to read a lot. And why everybody says, in my MSc's days I used to read a lot of fictions, and still I used to write Russian. Isaac Asimov was one of the fiction writer we read a lot, he has a lot of fiction science books, So what it tells you how to increase your thought process. See, something is beyond which is not realistic, that becomes a fiction, and after fiction becomes a reality after some time. Okay, so be a reader, get your life out of these mobiles, and focus on reading. Mobile is also a mean to read it, okay, but read a lot. I think these things we are lagging day by day. Contributing to the entrepreneurial or entrepreneurial competencies, contribute to value creation, impact university for the several innovation channels, and that's how people now, I will be talking more on it, that there is a fund crunch, but people are there to give you money, provided they see. I was here listening one thought from a Nobel laureate, and he said
your research is as good as a $1. What does it mean? It means if you have something, if you go to the market, if somebody pays you $1, it's a worth. Okay. Research publication, it's all okay. For academic means you need. If you would have not published, other people would have not read it and they would have not climbed to that position. So publication is important, knowledge sharing is important, but do something which can be worth in many ways. So I am just giving, these are the, this is a central dogma for drug discovery. We have repeated this slide many times. Target identification, hit discovery, lead. So I am just giving where is the role from academic and where is the industry role. Academic, industry, they all go parallel till the preclinical. So these are the zone which tells you that here you can, these are the zone where you can tell that you can work from academic perspective. Small things, he was telling you make a small molecule, you do a assay, you do small things. I am telling you do one assay, you catch up with the lab and say what you do, can you help me out. When I was doing PhD here in MU, we were doing on something a tocotrienol rich fraction, wanted to see that CHD, whether the chronic heart disease and all those things, and then we were working on a rabbit. So we dealt with some of the people with the anatomy department and other department. They took out the whole aorta and then they scrap it. I didn't did it, they helped me. So there was a cross-functional work, and we were working with Dr. Jamal also. We published a couple of papers with those things. So what I am telling, at that time we worked together, we worked with 3-4 labs, department, and then only my thesis came out, you know. So I think you all should know which lab is doing what. That is more important. Know-how is important. I think that's the best part. And which lab has instrument. I don't know how quickly you can access those instruments, but at least the PhD student who will be working will help you something. If you want to get a molecule, you want to clean it up, you want to run HPLC or LCMS, ask those guys to run one injection and help you out with that. And then you should have some information. So this is the way science is. Nobody can do alone anything. So think of it, make a procedure. That was what we were doing. You all got an idea, but first thing is an idea. Second is how you will pursue with that idea. And third, how realistic that idea is. When you start writing how you will pursue step by step, when you say step by step, I have to go out of the university, I have to write, I have to take 5 steps here, move right side, open the door, root outside, there will be a couple of people standing and they will ask, hey, where are you, why you are going inside, I have to answer, move out, get in my car, open it, switch the switch. You have to write small, that is known. What is the difference between protocol and SOPs, anybody knows? Anybody knows what is the difference between a protocol and SOPs? Yeah, both. Okay. Protocol give you an idea. It's still you refine. You say how you have to do all those things, detail. But the detail, as standard operating procedure is known as SOPs. SOPs is one I was making in my lab SOP around 20 years back in industry. There was when we used to make SOP, the concept was if I give my SOP to someone and if I bring a college boy of 12th standard or a 10th standard, he can perform that assay. That is known as SOP. You don't need knowledge, you just read it, it will tell ट्यूब उठाओ, रखो, पाइपेट उठाओ, उसके अंदर टिप लगाओ, इतने ml की पाइपेट है, 3 ml की, 1 ml की, 0.1 ml की, उठाओ, उसको रखो, उसको क्लिक करो, उसमें लगाओ, फिर बफर डालो, बफर वहाँ रखो, वहाँ पे टेबल. मतलब उसमें ये है कि आप एक एक स्टेप आपके पास लिखा हुआ है. तो दैट इज नोन एज एसओपी. तो जब आप भी प्रोग्राम बनाओ, कोई प्रोजेक्ट लिखो, तो एक एसओपी बना के डाल दो उसमें. और एसओपी एटर्नल होती है.
हर लैब की एसओपी एटर्नल होती है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता, वो चिपका दिया जाता है कि जिंदगी भर कोई आता रहेगा, आपका नाम लिखा है और चलती रहेगी। खैर, तो ये है इंडस्ट्री कहाँ रोल प्ले कर सकती है, एकेडमिया बहुत जगह दोनों साथ काम कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है रिसर्च की आजकल यूनिवर्सिटी में, जो मैं समझता हूँ बाहर से। फर्स्ट इज लैक ऑफ सपोर्टिव इकोसिस्टम। ऐसा लगता है जहाँ ये कह के हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वी कांट ब्लेम एंड मूव फॉरवर्ड, नो, वी हैव टू सॉल्व दैट, ओके, एंड दैट्स ओनस इज ऑन अस, ओके, there will be hindrance, but there is onus on us how we can solve this problem and how we will make this ecosystem a better. हमारे पहले वालों ने जो किया उसकी गलती हम नहीं करेंगे, हम आगे एक अच्छा ecosystem, at least this group, you all a group meet together, have some group discussion, we learned it. I am a physicist, I am a mathematician, I am agriculture sciences, I am a nanotechnologist, I am a biochemist, I am a molecular biologist, I am a molecular medicine person, I have a versatile group here. Why don't we do one thing? Why don't we make a small cross-functional team? Let's float an idea and say, this is an idea, what are the things which you will be filling in these boxes, and can we write a proposal or a review at least and publish a paper? No paper is good. People love to have one man paper. No, I have a lot of paper, and we have people of 20, 25, many people from Harvard, people from many different places. I can show you some paper which we publish, and that is how it is. More the people, more the beautiful paper you can write it. डोंट बिलीव दैट मेरा नाम हो जाए, मैं लिख दूं, ना ना ना, पेपर अच्छा होना चाहिए, उसकी साइटेशन वैल्यू करती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, और कितना इम्पैक्ट फैक्टर मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। एक पेपर से 8 अगर स्कोर जाओगे तो इतना ही मिलेगा। कुछ पेपर हैं जो 15-16 साइंटिफिक रिपोर्ट्स के पेपर है, साइटेशन बढ़ती जा रही क्योंकि वो रिलेवेंट पेपर है, ठीक है ना। तो ये कोशिश करो कि ये ना करो कि ये, तो ये ग्रुप है, इस पर एक तुम लोग पायलट प्रोजेक्ट डाल दो, एक ग्रुप को मेंटेन रखना अपने पास, इस ग्रुप को, एंड थ्रो आउट द आइडियाज एंड से लेट्स मीट ऑन अ कॉफी, लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स, and you can do it. Take help of Dr. Azhar and he will guide you once you write something preliminary on it. Okay? So communication should not stop. You paid it, you came it, you joined it, you left it, and then bye bye, we will see together once a year back something. Okay? Don't do that. Take this legacy forward. Positive funding balance, that's a challenge. Nurturing collaboration and entrepreneurship, that is one of the things people don't think. हर आदमी डिग्री लेना चाहता है और जाना चाहता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, अभी कल ही की न्यूज़ है, मैंने लिंक्डइन पे देख रहा था, और आई विल शो यू। मोस्ट ऑफ द बिजनेस डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, यूनिट्स इन द कंट्री डू हैव कॉन्फिडेंस। तो ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों जो है हम लोग एज ए इंडस्ट्री कॉन्फिडेंस नहीं है। मटीरियल सप्लाइड बाय देम टू द रिसर्चर विल नॉट बी मिसयूज्ड एज सच, दे ऑफन रिलक्टेंट इन सप्लाइंग इन नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टू द रिसर्चर। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है एथिक्स की। हम ये बिलीव नहीं कर पाते हैं मैं अपना मटेरियल दूं और उसको वो हमारे ही काम में यूज़ करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसका कहीं मिसयूज़ कर लें या उसको यूज़ कर लें। उसका स्ट्रक्चर अगर हमने तो कोई नहीं देता है, मगर कुछ इलस्ट्रेट कर दो, इसलिए थोड़ा इनहिबिशन है। तो ये भी हमें ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के लिए। देन इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट इंटरेक्शन विद द यूनिवर्सिटी अक्सर होता ही है। अब हम आज आए हैं, पता नहीं 2-4 साल बाद कोई और इंडस्ट्री से आएगा, कोई बात करेगा, तो फ्रीक्वेंट रिलेशनशिप नहीं रहता है। लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, एंड देन दे लीव, दे मूव फॉरवर्ड, तो दैट शुड नॉट बी देयर। देन यू हैव अ टाइमली सेक्रेटेड असिस्टेंट इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंस एंड ब्रॉड टू नैरो, ये सब फोकस बहुत है। वॉट ड्रग डिस्कवरी इंडस्ट्री इज लुकिंग फ्रॉम एकेडमिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या चाह रहा है। हम ड्रग डिस्कवरी की इंडस्ट्री जो है एकेडमिया से क्या एक्सपेक्ट करता है। हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हम चाहते हैं टारगेट आइडियाज़ आपकी तरफ से आए। आइडिया की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए आइडिया एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी, पढ़े लिखे से भी मिल सकता है और नहीं पढ़े लिखे से भी मिल सकता है। वो भी सोच सकता है सर ऐसी बीमारी है, ऐसे इसका क्या कर रहे हो, कुछ तो करो इसके बारे में। वो कुछ और भी बोलता है तो आदमी का क्लिक कर जाता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक दिस, पीपल वेंट टू द कैब ड्राइवर टोल्ड समथिंग, पीपल वर सिटिंग इन द बैक सीट एंड दे थिंक ऑफ इट, दे वेंट टू द लैब एंड थिंग्स हैव चेंज एंड दे बिकेम समथिंग न्यू, दे केम अप, यू नो।
सो दीज आर द स्टोरीज। कैटर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फॉर्मुलेशन, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आजकल बहुत सारे ड्रग आईवी दिए जाते हैं, ओरल नहीं दिए जा रहे हैं। ये कितनी अच्छी फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, खासतौर से एब्जॉर्प्शन, टारगेटेड डिलीवरी के बारे में। वहाँ अगर आपने कर दिया तो आई थिंक यू विल डू ए हाफ ऑफ इट जॉब। और जो नैनो टेक्नोलॉजी में एक्सप्लोर करो इसको, ये फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर आदमी चाह रहा है किसी तरह से हम कोई फॉर्मुलेट कर लें, कुछ उसके अंदर टैगिंग कर दें ताकि हमारा ड्रग, क्योंकि तुम भी जानते हो कितने लोग हैं, अपने घर में जाओ और कहो कि ड्रग देना है तो ओरल दोगे या आईवी दोगे। हर आदमी चाहता है ओरल ले ले। पेशेंट कंप्लायंस जो है वो ओरल से है, आईवी से नहीं होती है। तो जो आईवी ड्रग इसलिए मजबूरी में बने हैं, और कुछ ड्रग है जो ओरल भी है, आईवी ज़रूरत से भी बनते हैं, मगर जो मजबूरी से बन गए, जिनकी सॉल्युबिलिटी नहीं थी, एब्जॉर्प्शन नहीं था, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो वो लोग नहीं बना पाए। तो इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी ब्रांच है, उसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करो, थोड़ा एनिमल स्टडीज़ और हो जाए, तुम लोग बना के एक फॉर्मुलेट करके उसको दे सकते हो। ड्रग की लिस्ट बना लो, विच आर ओरल, which can't be which are IV, which can be not been oral due to some solubility issue or absorption issue or distribution issue, ये नहीं हो पाए। एक लिस्ट बना लो, उन लिस्ट में देखो कि कौन सबसे ज़्यादा मार्केट में इस वक्त चल रहा है, और उसके बाद एक लिस्ट बना के देखो कि अब उसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर देख के देखो कि तुम एक नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो, तुम एक फिजिस्ट हो, इंजीनियर हो, पॉलीमर के लोग होते हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ पाई है वो देखो कि हम इसमें कैसे यूज़ कर सकें नॉन टॉक्सिक लगा के। और कल को ये देख, एक बार एनिमल एक स्टडी कर लो, उसमें एब्जॉर्प्शन दोनों कंपेरेटिव कर लो, आईवी और ओरल को, विदाउट नैनो फॉर्मुलेशन एंड विद फॉर्मुलेशन ओरली देख लो, एक कंपेरेटिव दे। आई कैन टेल यू, यू विल गेट दैट पेपर इन ए वेरी हाई impact journal if you love publication. If you don't love publication, keep with your heart, keep on working, do in the larger animal, and then send to the people and say we have a project, write a project, get some money from the people and say we have an idea, I don't want to show you compound, this is the compound, there are a lot of takers sitting. India is rich in making all those generic formulation and only formulating, they are only doing formulation work. So they love Cipla and many companies, they look for these idea. You float that idea, send to those people to write a letter and say I have a idea with me, I have a molecule, preliminary data in a mice shows something, I can't tell you which is the nanotechnology which we have developed which will be helping your compound, but this compound if I make it, if you give me 5 lakhs or 10 lakh rupees, I can do some animal studies and do a POC with you or a proof of concept, and if you really like I can transfer the technology and then we can deal further. For what initial work as an academic student or a academic teacher, I don't have money, you sponsor me, people are ready on the gate, they will, for them 10 lakh, 20 lakh, 50 lakh is not a big thing. If they get idea, they will make a lot of money and you will get a royalty of it. So these are the idea, you have to think of it, okay. Access the niche and a unique involvement. That is what I every time tell, don't go with a hi-fi thing, don't go on a fancy science. People go with a fancy sign, lot of English, I have a cancer drug, nobody has a cancer drug, okay. Can't have in an academy a cancer drug until you face, you have seen now. You can only have an activity of a micromolar and you don't know whether it will survive to once it will given to the body or not. We have read all, now you have understanding how it goes. But you go with a small thing, that is what I am trying to say, access to niche and unique. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आगे चल के कि नीश और कोई बहुत अच्छा मॉडल हो, कुछ नया मॉडल तुम्हारे पास हो जो किसी के पास नहीं है, और इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप जर्नल में देखो कि ये है, अच्छा इसका ये मॉडल है, कहीं हम ये मॉडल को हम डेवलप कर, ट्यूमर मॉडल है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जीनोग्राफ्ट मॉडल है, हम डेवलप कर सकते हैं कि नहीं। पहले आपके पास एक पेपर वर्क हो, उसको पब्लिक है, उसको बायरॉक को लिखो, किसी को प्रोजेक्ट देने के लिए लोग तैयार है, बुलाते हैं सिबरी उबरी, वहाँ आके आप प्रेजेंट करो और नए आइडिया लो, पैसे लो। So that is a new idea. I am giving you all those some leaves for you guys to think of it and focus on it. That's all. You have to focus on small things and people are there to pay you. वो ढर्रा नहीं होना चाहिए, जो
जो हमारे बॉस ने किया, बॉस ने बॉस को बताया, उसने अपनी ज़िंदगी में वही काम किया तो उसने उसको बताया, वो चलता चला आ रहा है, वही काम होता जा रहा है। अच्छी चीज़ है, उनसे वो बेसिक है, मगर उसका एप्लीकेशन अगर हमने यूज़ कर लिया तो हम कहीं ना कहीं अच्छे पैसे भी ले लेंगे, प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, पेपर भी हो जाएगा और आपका सर्वाइवल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको एब्जॉर्ब भी लोग करेंगे उसी तरह। ठीक। Establish a meeting, a platform and scientific forum, that what we are doing here. Regulatory infrastructure, the most important thing start a habit of confidentiality. In your idea, when you are doing some experiment और जहाँ भी बैठे एक डायरी अपनी पर्सनल होनी चाहिए, साइंटिफिक पर्सनल, ओके, उसको आप अपने जो भी दिमाग में आए उसको लिखने की आदत डालो। कुछ भी आए, कुछ भी चलते चलते आया और कहा यार अगर हम ये कर लें तो ये हो जाए, राइट इट, मे बी ए रबिश आइडिया, राइट इट, and then if you get a free time, this is the time of a Google, this is the time of AI, this is the time you Google out, tell how I can proceed with this, and chat GPT, if you have something which is a detailed one, it will tell you how to do, at least it will give you a framework to work on it, and then you start, go to the library, work, start on it, okay. So important is the best way, that what I usually repeat a lot, best way to have a good idea is to have a lot of ideas. That is how we have to do it. This is academia versus industrial comparison. What in academic want is novelty, hypothesis testing, that is what their focus is. एंड इंडस्ट्री इज डी रिस्किंग, हमेशा मनी उसके इन्वॉल्व रहता है, इसलिए डी रिस्किंग हमेशा डालते हैं। IND पेशेंट बेनिफिट, ROI कितना मिलेगा, कोई भी पूछता है ना, वो तुमने मारुति का ऐड देखा होगा, वो कहता है ये है एवरेज कितना देती है, दैट इज़ व्हाट ROI इज़, कि कितना लगाया और कितना मिला। तो ये हम लोग का अक्सर फोकस रहता है। टाइमलाइन फ्लेक्सिबल, लॉन्ग टर्म, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है टाइमलाइन का, आप 2 साल में करो, 4 साल में करो, पंचवर्षीय योजना बना के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पास वो प्रेशर नहीं है, इसलिए आप उसको आयरन अप करके कर सकते हो, ये नहीं कि भूल गए और याद आया तो फिर किया, ठीक है। हमारे साथ स्ट्रिक्ट माइलस्टोन ड्रिवन होता है, लिमिटेड फंडिंग है, स्मॉल टीम होती है, वहाँ लार्ज बजट रहता है, और ये एक्सप्लोरेटरी काम होता है हमेशा। एकेडमिया का एक्सप्लोरेटरी चले तो ठीक, हमारे साथ ऐसा नहीं है, फेल फास्ट किल फर्स्ट। 80% ऑफ फेलियर अनरिलेटेड टू बायोलॉजी, दो बायोलॉजी में जो रिलेटेड अनरिलेटेड है, हमेशा फेलियर जो होते हैं वो पीके से आता है, टॉक से आता है, सॉलिबिलिटी डेवलपिलिटी। अब सॉलिबिलिटी कम है, कंपाउंड बहुत अच्छा है, मगर आदमी ये देखता है कंपाउंड की एक्टिविटी बहुत अच्छी है, एनिमल में भी बहुत अच्छी आ गई है, ह्यूमन में भी अच्छा है, मगर वो कमर्शियल एस्पेक्ट पे देखता है कि अगर हमने फॉर्मुलेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो इतना रुपया लगेगा, व्हाई द हेल आई शुड डू इट, दैट डजंट कम्स विद द कंपनी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी, इसलिए वो रोक देते हैं। एनीवे, why focus innovation matters? Now the question is innovation. देखो दुनिया इनोवेशन पे जा रही है, दो काम होते हैं, एक होता है कि आदमी सब काम करे और करने के बाद रोज परचून की दुकान पे सब्जी बेचने वाला जो है या परचून के वो बेचता है, सामान बेचता रहता है और आप भी खरीदते हो, वो उतना ही कमाता है, 20 रुपए का लाया 22 रुपए का बेच दिया, यही उसका सिस्टम है, मिनिमम प्रॉफिट, मगर उसका रनिंग चलती रहती है। मगर किसी आप कोई डिज़ाइनर के पास जाओ, कोई होम डिकॉर के पास जाओ, आए और वो मुंह मांगे पैसे मांग लेता है, क्योंकि वो आपको पता है वो इनोवेशन है, नया है, नया के पैसे हमेशा। तो हमेशा फोकस करो नया, कुछ नया सोचो, है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन थिंक ऑफ इट, एंड एज अ साइंटिस्ट दैट शुड योर एम। Don't bring problem with a problem solving, or at least a leaf of it. Discuss with a forum whom you trust or whom you feel that he will not humiliate you, and sit together and discuss. Usually आदमी सोचता है इससे बात करेंगे कहीं, बेवकूफ़ी की बात कर, चले यहाँ से। That should not be there, okay? Trust it, make a strong team, discuss openly that what we are going to do it, and hopefully it will help you out. Aligning with the industry need, सस्टेनिंग एकेडमिक रेलेवेंस, ये सब। कल मैं लिंक्डइन पोस्ट देख रहा था, एंड दैट इज हाउ द चाइना हैज फ्लिप्ड द ट्रेडिशनल मॉडल, एंड नाउ चाइना इज सेइंग PhD स्टूडेंट नाउ नीड ए प्रोडक्ट नॉट ए थीसिस, ओके।
तो मुझे पसंद आया, yesterday night only, today morning at 5:30 I put that thing. So what I am telling you कि अब जो है थीसिस नहीं प्रोडक्ट की तरफ, अब एटलीस्ट चाइना से हम compete अभी आगे कितने साल में करेंगे, मगर हमारा थॉट प्रोसेस हो जाना चाहिए कि अब हमें कुछ ऐसा करना है जो कि आगे हम पेटेंट कर लें, कम से कम नहीं पेटेंट कर सकते, कुछ नया करके देंगे ताकि लोग उसको लीफ लेके पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी एक डिजास्टर है इंडियन इंडस्ट्री के लिए और अच्छी चीज़ है इनोवेशन के लिए कि फार्मेसी वर्ड जो है वो ज़्यादा दिन तक कॉपी नहीं कर सकता है, अब उसको नया चाहिए। अभी आपने देखा होगा इंडिया में, यूएस में जो है, यूएस ने जब टैरिफ बढ़ा दिया और कितना इश्यूज हो गए, अब इंडिया के लिए एक मजबूरी हो गई है कि वो जो है अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए। इफ दे विल नॉट मेक इट, then we all will be in pressure forever and ever. Okay, so now I think there will be a tangential change in the mindset of many people, even the governing funding agency, even the student professors and other people. There should be a change, and probably it will give a change. When you shake someone, then only things comes in order. Okay. Okay, तो इंटरफेस स्नैपशॉट क्या है, व्हाट एकेडमिया कैन ऑफर, एक्सपर्ट स्पेसिफिक, आइडेंटिफाई एंड डेवलप, स्टेट ऑफ आर्ट दे सकता है, आइडेंटिफाई एंड डेवलप ए टेक्नोलॉजी, वेल ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्स, पेटेंटिंग, लाइसेंसिंग, टेक टेक्नोलॉजी, टेक कंसल्टिव, दीज आर द एडिंग पॉइंट, टारगेटेड ऑडियंस, स्टेक। तो what we can do is better, small funders and investor, venture capitalists की तरफ देख सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, दीज आर द पीपल होम वी कैन फ्रॉम एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन every time work with them and say these are the people looking for you if you bring all these things in the table. How in academia industry interface happen, अपसाइड ऑफ ए, अगर दोनों का कोलैबोरेशन हो जाए यूनिवर्सिटी और एकेडमिया का, तो उस पर फायदे क्या क्या है, increasing innovation and creativity, link scientific research results with the development, commercializing technologies, low unemployment rate, increase SMEs, SMEs, you know, small business and medium level of an employment engagements, and students have a opportunity to do that, a inflow of a talent, name and fame every time it comes. Once you have a name, what university need to work, capability slide. Now I think a university as a AMU, they should have one capability, whole capability slide, whatever they have they can put it, centralized list of a high-end instrument, best practice application. These if we do, then probably people will come, you have a half shot ready and you can do. I will tell you my personal collaborations and the story which I really love AMU, why I think AMU can also do it if other people can't do it. I have a collaboration with Harvard, with the Denisa D. Wagner Lab, and we have a Vistar University with Julia, Tel Aviv University by Dianora. We have these collaboration going on, and what happened, they have a niche ACA model expertise which in industry need to prove of a concept, in return university or a PI get a good funding, say by the novel. This is how it is. What we do with them, they bring some niche. If we wanted some models, we wanted some animal studies, but they were having a ready. If we would have done with those guys, we would have done in a year, we would have established those method and models and all. So we paid a huge amount of money to them to help their collaboration, and then we allowed, given a tool compound to them to have a publication. Okay, because university says, oh, okay, fine, money is fine, but we need publication. From where we will get a publication? So that also get it. We have published some paper. This was the paper we published. See how many people are there in that publication. Okay, and this is scientific reports का पेपर है. हमने हार्वर्ड के साथ ये कोलैबोरेशन जब किया तो उनको एक टूल कंपाउंड दिया और एक जो एक्चुअल कंपाउंड था उसको हमने उनको हाइड करके दिया था ताकि उनको पता ना चले. And we asked them, you can publish with this number which is there, and they publish it, and this is the paper we got it. Okay, we also get the name in it because this is our molecule, and they get the paper. They published in they even सेलेक्टेड नहीं. एक और पेपर था जो हमारा, जो हमने जो है
जो विस्टार इंस्टीट्यूट के साथ किया था, और ये भी देख लो कितने लोग हैं। तो पेपर ये नहीं है कि 2 आदमी का नाम आ जाए, 4 आदमी का नाम आ जाए, वो नहीं इंपॉर्टेंट है, कितने कंट्रीब्यूटर हैं, कितने रियल कंट्रीब्यूटर हैं, वो इंपॉर्टेंट। पेपर बड़ा हो जाए, नाम आ जाए, कोई वैल्यू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा पेपर होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं फिर रिपीट करता हूं वर्ड कि साइलॉस पे रिसर्च नहीं होती है, इट्स ए कोलैबोरेशन है। Try to remove that barrier. We have to work together, and this I was just trying to give you an example. I will tell you one story. This is also one paper we published here, and this was one of our drug which is still in phase 2 molecule, and this is our chemistry effort which we did it. And how means I am telling you what is the whole story, one giving one classical story. chemistry की जाती है, chemistry के बाद हम उसके SAR रन करते हैं, उसके बाद अलग सा उसका सेकंड आर्म को करते हैं, बाद में बायोलॉजी ऐसे करते हैं जो सेट होता है, उसके बाद बायोकेमिकल ऐसे करते हैं। वही कल उस दिन बता रहा था कि देखो ये IC5050 किस तरह से हम लोग करते हैं, ये पूरा जो है रन किया जाता है, फिर TR फ्रेट असे है, दीज असेज इफ़ वी हैव। तो उसके बाद हम मॉडल रन करते हैं, करने के बाद जो है ये PD है, PD बायोमार्कर है, वो भी स्टडी की जाती है, और उसके बाद टारगेट एंगेजमेंट स्टडी की जाती है, जीनोग्राफ मॉडल रन किया जाता है, और उसके जीनोग्राफ मॉडल रन करने के बाद हम जो है फिर PK करते हैं, जो हम बता रहे थे, ये रियल टाइम डाटा है और PK का, और उसके बाद PK प्रोफाइल में हम बताते हैं कंपाउंड कैसे काम कर रहा है। उसके बाद प्रोफाइल हो जाता है, ये कंपाउंड का टोटल प्रोफाइल है, लुक दिखता है। And then we do efficacy, in biology efficacy we do, this is the whole story which comes, and this is how the whole molecule package goes, and it goes to the IND, where we go and go to the FDA and ask FDA if they permit us to do that, and that's how FDA approved our drug to move forward. We did in US, we are doing in Australia, we are doing in India also. So this is the molecule, and luckily we have, I am too a member of that compound which has a patent on it. So what is the more important is a lot of work goes on a success of anything, and it takes a lot of patience, courage and effort to get it. कल मैं एक और चीज़ देख रहा था लिंक्डइन पे, और ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है। इंडियन पैंडोरम एक कंपनी है बेंगलुरु बेस्ड, जिसको कल उसने $10 मिलियन जो है रेस किया है फेज़ बी में, सीरीज बी फोकस पे, रीजेनरेटिव मेडिसिन के बारे में है, बायो प्रिंटेड ह्यूमन टिश्यूज, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि फ्यूचर इज नाउ हेयर, फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑर्गन इन चिप, future is in going to do some in vitro where you can raise, or you don't want to use animal. People are pushing, there is ethic committee pressure on us that you should not use animal. So this is the job of a scientist, to come up with the new ideas and say we have a model which is as good as an animal, at least 70% closer to the animal, where you are going to use 20,000 or 200 animals there, you can reduce to 20 animal. You have done extremely good job, and people are going to buy. These guys are also doing on those line funds for the operation subsidiary growth, and this is, I was trying to get this, I pulled yesterday only, and this is the news which came yesterday in my post. Okay, so these are the thing, people, there are 2 young birds and they raise a lot of money, and they have an idea, they floated it, and now they are doing it. So completing this whole process with the stillest logo that let's unite to conquer the challenge for the patient to need. So this is how academia and the industry can collaborate together, they can make hand, and they can succeed. On this note, best of luck to you all, and hope you guys enjoyed it. Sir, stage is your all. If any question, please shoot. Of course, all those, see, toxicity is the only thing which has a, which doesn't need a specific thing to understand. You know, बॉडी का रिस्पॉन्स देखना है। अब आप सीधे पैरेंट मॉलिक्यूल दे दो,
उसको किसी से लिंक करके दे दो, बॉडी के अंदर कुछ भी जाएगा उसके टेस्ट में टॉक्सिक जो पैरामीटर वो सेम है। अब डिपेंड करता है कि आप किस जगह देखना चाह रहे हैं। टारगेट आपका लीवर है तो आपको लीवर और माइन्यूटली देखना पड़ेगा, आपको एलएफटी करना पड़ेगा, उसको हिस्टोपैथ करना पड़ेगा, आपको देखना कहेंगे फाइब्रोसिस तो नहीं है, कॉलेंजियोफाइब्रोसिस तो नहीं है, हैं तो हिस्टोकेमिस्ट्री में आपको उसको पूरे एंगल देखने पड़ेंगे। यहाँ आपकी लैब है माइक्रो उसकी क्या नाम पैथोलॉजी की, उनसे भी डील कर लो, उनसे कहो कि मैं एनिमल को दूंगा 28 दिन तक डोजिंग, वो भी डिपेंड करता है आप कितने दिन की डोजिंग के एनिमल आप डोजिंग आप सोच रहे हो। एक्यूट टॉक्स होता है, क्रोनिक टॉक्स होता है। एक्यूट में पहले दिन आप बहुत ज़्यादा डोज दे देते हो 1000 mg तक या किसी लेवल तक, और जाके देखते हो कि क्या हाल हुआ एक दिन में, फिर वो धीमे धीमे आप क्रोनिक पे जाते हो। 28 दिन का है किसी का, डिपेंड करता है कि साइकिल क्या रहेगी ह्यूमन में। तो आपने 14 दिन का पहले स्टडी करते हैं, हम लोग 7 डेज़ की रिपीट पहले करते हैं एक हायर डोज पे, और उसको देखते हैं क्या हुआ। फिर उसके आप टिश्यू निकाल लो, आप उसका जो है काइनेटिक्स तो आप नहीं कर पाओगे अगर, तो टिश्यू भी निकाल लो, उसको ऑब्जर्व करो, टिश्यू निकाल के दे दो किसी को, कह दो कि हमने लीवर टारगेट किया था और ड्रग हमारा, आपको ये कंफर्म करना है कि आपको ड्रग वो पहुंचा है लीवर में कि नहीं पहुंचा है। ये कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, कैसे, उसके लिए मैंने बार बार बोला यू हैव टू डू ए कंपेरेटिव स्टडी विद एनिमल स्टडी एंड डू इट। एसपीएलसी अगर है तो अच्छा मेथड है तो मॉलिक्यूल डेवलप कर लो, एक मेथड डेवलप करके आपको पता चल जाएगा मॉलिक्यूल वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, और नहीं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल लेके आप किसी पैथोलॉजी वाले से बात कर लो कि ये मेरा है थोड़ा सा, इसका ज़रा सा लीवर देख के बता दो, हिस्टोपैथ कोई इशू तो नहीं है, हैं तो वो आपको फीडबैक दे देगा, एक प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर आपके पास पैसा आए तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल लैब अवेलेबल, दे विल टेक सम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड प्रोबेबली वंस यू कम ऑन academia they may not take you much of a profit and they can do your studies and they can be helpful for you. Anything else? Done? Good. Yep. And if is there any ethical, I missed you. Can you come again? Sir, can you tell about procedure that how a novel idea reached industry directly, and if is there any ethical guideline approved by FDA regarding this? There are two things. I should repeat, rephrase your question if I understood rightly. You want to say that how in industry you come up with novel idea, Yes, sir. or you want to say that you have a novel idea, how it will come to industry? Which part you want to know? Sir, my novel idea Wonderful. that should reach industry directly. Absolutely, it's not directly. That's what I was telling. I told you earlier that even given a nanotechnology example, then you have to first do some preliminary work. You have an idea, everybody has an idea, but this idea, you conceived the idea, but idea is really going to work or not. So at least some preliminary hypothesis you should have. If you have a preliminary hypothesis, you have worked something, you have some data with you, and then you can write to the companies which are working. If you work on, there are a lot of patent are going to expire, okay, this year or next year. See those molecules. A lot of Indian companies started working on it. So you think of that and limit yourself and say, इसमें ये issue है और हमने इसको सॉल्व कर लिया। मान लो एक हम एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे ओरल बायोबिलिटी का दे देते हैं, इसकी ओरल बायोबिल नहीं है, तुमने कहा मेरे पास आइडिया है, अब मेरे पास ये मॉलिक्यूल, मेरे पास जो हम काम कर रहे हैं, अगर हम इसको अटैच कर देंगे, क्योंकि इसमें क्लोरीन वॉट एवर द अटैचमेंट नीडेड उस स्ट्रक्चर में है, वो काम कर जाएगा, मगर मेरे पास पैसा नहीं करने के लिए, अगर आप मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए दे दो अर्ली ऑन सीडिंग फंड, तो हम आपको ये प्रूफ करके बता देंगे, और फिर बाद में हम और पैसे लेंगे और काम करेंगे। ठीक है, आप उनसे एक सीडीए साइन कर लो, कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं, उनसे साइन कर लो, तो दोनों के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, वो आपकी बात को फैलाएंगे नहीं, बात करेंगे नहीं। और दूसरा ऑप्शन वो कहेंगे हम आपको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने यहाँ, ये भी एक ऑप्शन दे सकते हैं, आपको नहीं मैं खुद करूँगा, अपनी पीएचडी करूँगा, आप ये फ्लोट करूँगा, तो इट्स एन आइडिया। तो डिपेंड की व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीच टू द राइट पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड टू दैट।
Okay, and the other way is the forums. Go and join some conferences, present your paper and say, oh, that this is what I have done. I can't open many things. I have a confidentiality with it. Don't open every damn thing which you have. Just close yourself, put some card on your chest and show something which can attract people and say, I can discuss you. Let's have a CDA with you. Okay? Yes, anything else? Good. Thank you very much. Appreciate. Hey, I will be leaving. Okay, so thank you so much. Hey, thank you. And if you have any questions for him, he's available for a few more minutes, I can say. Yeah, yeah. And if not, then again, we are always, I'll share you his email and phone number and सर everything. जब सीडिंग राउंड रेज करते हैं जो हमने कुछ अगर फंड लिया है, अगर सर हमारा डिज़ायर रिजल्ट नहीं आता है तो उस फंड का मतलब कुछ हमें रीपे करना होता है, या जैसे हमारे पास कोई आइडिया है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हमने कोई सीडिंग राउंड रेज किया तो उसके लिए हमने कुछ फंड लिया पर हमारा डिज़ायर रिजल्ट नहीं आया तो उसके बाद तुमने कोई गारंटी दी थी उनको? हैं? Leave it. This is all seeding. It's all. They have not given you $1 billion for that, na? This is a seeding. It will work. It will pass or it will fail. It will succeed. You don't know. We are all doing experiments. Everybody understand that, huh?